एवरीवन स्वागत करुछि आज रे क्लास को ए क्लास रे हमें +3 फर्स्ट सेमिस्टर रो इंट्रोडक्टरी माइक्रोइकोनॉमिक्स रो यूनिट 3 और यूनिट 4 रो किछटा क्वेश्चन देखिबा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। सो जदि क्लास टी हेल्पफुल हबो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। सो लेट्स बिगिन द क्लास। So very short type questions. First question is, what is variable factors of production? What is variable factors of production? The factors whose quantity can be changed is called the variable factors of production in the short run. In the short run माने गोटे स्वल्प टाइम रे कम समय रे जोटा को हमें परिवर्तन करि परिबा, जो उत्पादन साधन को हमें स्वल्प काल रे परिवर्तन करि परिबा, जेमती हमर कंचामाल हैला, रॉ मटेरियल्स किंबा लेबर हैला। ओके, रॉ मटेरियल्स, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी भी पारिबो। सो these are the variable factors of production. The factor whose quantity can be changed in the short run is called the variable factors of production. Okay, whose quantity can be changed, जार परिमाण को आम स्वल्प काल रे परिवर्तन करि परिबा, जे उत्पादन साधन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माने कौन, जोटा उत्पादन रे हमको साहाय्य करिथाय, जो जो जिनस सब व्यवहार हुए उत्पादन करे ताकू आम उत्पादन साधन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहिथाउ। सो रॉ मटेरियल्स हैला, लेबर हैला, इलेक्ट्रिसिटी हैला, ए जिनस को आम माने कम समय रे परिवर्तन करि परिबा। ओके, जदि अधिक उत्पादन ताले लेबर अधिक यूज करिबा किंबा रॉ मटेरियल्स अधिक यूज करि परिबा। So this is the variable factors of production. Second question is, what is fixed factor of production? Variable factor just opposite होची fixed factor. Okay, the factor whose quantity cannot be changed in the short run, जो साधन रो परिमाण स्वल्प काल रे परिवर्तन करा जाई पारे नाही, जेमती हमर लैंड हैला, जमी हैला किंबा बिल्डिंग हैला, बिल्डिंग किंबा मेशीन हैला, एटा को हमें कम टाइम रे परिवर्तन करि परिबा नहीं, जहा को किछि समय लागिबो परिवर्तन करिया पई। ओके, माने जिते बेले चाहिबा हमको ताकू कम बेसी करि परिबा नहीं। सो दिस इज द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देन थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट? The production per unit of factor is called average product. Production per unit of factor is called average product. तो एमती एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर करि परिबा हमें। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर माने कोन, टोटल प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ लेबर। एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ जदि कैपिटल हमें जदि करिबा, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जदि कले, टोटल प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। So what is average product? It is the production per unit of factor, which can be variable factor or fixed factor. Per unit of labor हम करि परिबा। सपोज 5 जन लेबर काम कले 50 पैकेट बिस्कुट उत्पादन कले, तो जने लेबर केते प्रोडक्शन करूची 50/5 माने 10। सो 10 इज द एवरेज प्रोडक्ट, माने जने लेबर केते उत्पादन करिवो, एवरेज केते, दैट इज the total product is divided by labor. सेमती मेशीन रो करि परिबा। सपोज ए 50 पैकेट बिस्कुट उत्पादन पई दुईटी मेशीन लागुची, दुईटी मेशीन लागुची, तो गोटे मेशीन रे केते होची 25 पैकेट होची 50/2, तो गोटे मेशीन रे केते उत्पादन होला, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो एवरेज प्रोडक्ट दुई प्रकार हे पारेबा, गोटे एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर आ गोटे हला एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। So average product of labor कौन, product per unit of labor, per unit of labor is called average product of labor. सेमती average product of capital कौन, the per unit total product per unit of capital is called average product of capital. Next question is, what is marginal product? What is marginal product? Marginal product is the change in total product due to employment of one additional unit of factor, one additional unit of factor. So marginal product of labor जदि करिबा में MPL, the change in total product is divided by
change in quantity of labor. So what is marginal product of labor? The change in total product due to employment of one additional unit of labor. सेमती marginal product of capital भी हो, the change in total product is divided by change in quantity of capital. So what is marginal product of capital? The change in total product due to employment of one additional unit of capital is called marginal product of capital. तो लेबर भी बाहर कर लेबर चेंज कले प्रोडक्शन केते चेंज होची मशीन गोटे यूनिट जदि अधिक बढ़ाऊे ताहले प्रोडक्शन केते चेंज होची ओके बोथ साइड रे पारिबो marginal product of labor भी पारिबो marginal product of capital भी पारिबो. So what is marginal product? The change in total product due to employment of one additional unit of factor is called marginal product. Next देखिए what is point of inflection? एटा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रे हमें पढ़िथिले. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कौन हुए टोटल प्रोडक्ट फास्ट इंक्रीजिंग रेट रे ग्रो करे तापर कौन हुए डिक्रीजिंग रेट रे ग्रो करे. तो जो जगह रे इंक्रीजिंग रु डिक्रीजिंग होची ए पॉइंट को कहा हुए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जोटी मार्जिनल प्रोडक्ट सर्वाधिक मैक्सिमम हुए. Okay, so what is point of inflection? Point of inflection is the point where the total product changes from increasing at a increasing rate to increasing at a diminishing rate. Okay, point of inflection is the point where the total product changes from increasing at a increasing rate to increasing at a decreasing rate. This is the point of inflection. Now what definition hame likhi pariba? It is the point where marginal product becomes maximum. It is the point of inflection is the point where marginal product becomes maximum. Okay, so this is about point of inflection. Next is what is average variable product? Average variable cost. So what is average variable cost? The variable cost per unit of variable factor. Variable cost per unit of variable factor or per product हमें कही परिबा. The variable cost per unit of product is called average variable cost. So average variable cost is equal to total variable cost is divided by quantity of product. माने गोटे द्रव्य उत्पादन रे आमे वेरिएबल कॉस्ट केते खर्च करछि माने रॉ मटेरियल्स और लेबर रे केते खर्च होछि. गोटे बिस्कुट तैयारी करिया पे गोटे बिस्कुट पैकेट रे मैदा रे क्षीर रे किंबा चीनी रे आमे जो खर्च करूछे किंबा लेबर रे जो खर्च होछि ताको कहा हुए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. Next question is what is average fixed cost? Fixed cost per unit of product is called average fixed cost. Fixed cost per unit of factor per unit of product is called average fixed cost. So average fixed cost is equal to total fixed cost is divided by quantity of product. माने गोटे बिस्कुट पैकेट तैयारी करिया पई मेसिन रे किंबा जमी रे किंबा बिल्डिंग रे जो खर्च करिछे that is average fixed cost. The fixed cost per unit of product is called average fixed cost. The next question is what is opportunity cost? What is opportunity cost? So opportunity cost is the return from next best alternative which is sacrificed. Okay, what is opportunity cost? Opportunity cost is the cost that is bear a person or producer for producing something when he is sacrificing something. Okay, so तमे याको कहि परिबा this is the return from next best alternative that is sacrifice. माने गोटे जो जमी जदि अच्छी जमी जदि आम धान करुचे आउ गहम करुचे धान रु सपोज 10,000 टंका होची
गहमर सपोज 8,000 टंका होची तो जदि आम धान चाष कले गहमर जो 8,000 टंका पाई थांते ताकू आम सैक्रिफाइस करुचे तो सही जो गहमर जोटा पाई थांते 8,000 टंका दैट इज द कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पेडी धान उत्पादन करने गहम जो आम उत्पादन माने जिते द्रव्य पाई थांते सेटा को त्याग करुचे तो सही त्यागर परिमाण को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा हुए दैट इज रिटर्न फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव परवर्ती सर्वोत्तम विकल्प रु आदायर त्याग व्हाट इज सो दिस इज अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रियल कॉस्ट रियल कॉस्ट इज pain and sacrifice borne by the producer to produce some quantity of goods. So what is real cost? Pain sacrifice beared by the producer for producing some quantity of goods. किसी द्रव्य उत्पादन करने पाई उत्पादक जो परिमाण जंत्रणा बा त्याग को बहन करिथांती ताहाकू रियल कॉस्ट कहा दैट इज द रियल कॉस्ट पेन एंड सैक्रिफाइस्ड बोर्न बाय ए प्रोड्यूसर जदि से किसी भी जिनस उत्पादन करछंती से रॉ मटेरियल्स कोठु आसीबो श्रमिक कोठु आसीबे जिनस कोठु सब जिनस आसीबो तो सेते पई किछिटा से त्याग करिथांती जंत्रणा करिथांती माने बहन करिथांती ताहाकू ही वास्तव परिव्यय कहे दैट इज रियल कॉस्ट नेक्स्ट इज व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट Economic cost is the combination of implicit cost and explicit cost. किछिटा कॉस्ट जोटा को आम काउंट करि पारिथाउ ताहाको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा हुए किछि जिनस आम काउंट करि पारुनी माने प्रोड्यूसर तार निजर जिनस जदि किछि लगेछि से निजर जमी कि निजर श्रम जदि देछि ताहले ए जिनस को मिसेला परे जोटा आम कैलकुलेट करि पारुछे आ जोटा कैलकुलेट करि पारु नाही दुईटा को मिसई देला परे हमको मिली थाए इकोनॉमिक कॉस्ट सो इकोनॉमिक कॉस्ट को हमें टोटल कॉस्ट भी कहि पारिबा बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट माने एक्सप्लिसिट कॉस्ट मीन्स व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट द कॉस्ट व्हिच कैन बी काउंटेड जोटा को हमें गणी पारि थाउ व्हिच कैन बी काउंटेड व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड और व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी मुद्रा आकार जोटा को हमें माने प्रकाश करि पारि थाउ ताको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाए तो जमती रॉ मटेरियल्स जो खर्च होइछि किंबा भड़ा जदि जो दउछे घर जदि नैछे भड़ा पई जो टंका खर्च होउछि ता सहित मजूरी रे जो खर्च होउछि से सब होचे एक्सप्लिसिट कॉस्ट आ इम्प्लिसिट कॉस्ट कोन जोटा को हमें देखि पारिबानी माने जदि उत्पादक जदि निजर जमी लगैछंती किंबा निजर पुंजी लगैछंती से किंबा निजे जदि श्रम दान करछंती ताहेले ताको हमें मेजर करि पारिबा नाही तो ये दुईटा जिनस को मिसे देले हुए इकोनॉमिक कॉस्ट जोटा को हमें मेजर करि पारुछे मुद्रा आकार रे ता भी रहिला जोटा को हमें मेजर करि पारु नाही जाको मापी माने गणी पारु नाही से ताको मिसे की हमें पाइथो इकोनॉमिक कॉस्ट सो इकोनॉमिक कॉस्ट is the sum total of explicit cost and implicit cost दुईटा जिनसा को मिसेले इकोनॉमिक कॉस्ट हुए नेक्स्ट व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल इकोनॉमीज ऑफ स्केल so economies of scale normally means decrease in cost when quantity of production increases what is economies of scale economies of scale means decrease in cost when production increases जो डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व थाए दैट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल माने एमती किछिटा फैक्टर्स जिते बेले आम अधिक प्रोडक्शन करूछे कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट को जोटा कम करि दिए दोज आर द इकोनॉमीज ऑफ स्केल ओके सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हेन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस दैट इज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल द पॉजिटिव फैक्टर्स आम कहि परिबा जोटा कॉस्ट को कम करि दिए दिस इज अबाउट इकोनॉमीज ऑफ स्केल नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल
इकोनोमीज जस्ट ऑपोजिट हो डिसइकोनोमीज ऑफ स्केल इंक्रीज इन कॉस्ट व्हेन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस इंक्रीज इन कॉस्ट जितेबाला इंक्रीज होचे बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड इकोनोमीज ऑफ स्केल माने या गोटे टाइप आम नेगेटिव फैक्टर्स कहि परिबा जोटा उत्पादन खर्च को वृद्धि करुछि ओके सो डिसइकोनोमीज ऑफ स्केल increases the cost of production when quantity of production increases उत्पादन परिमाण वृद्धि हेले जदि व्यय वृद्धि होइछे that is diseconomies of scale. Next is what is average revenue? What is average revenue? Revenue per unit of product or per unit of good is called average revenue. Revenue per unit of good is called average revenue. गोटे द्रव्य बिकिले आम जिते टंका पाउछि जिते टंका आय होछि दैट इज एवरेज रेवेन्यू सो एटा प्राइस सहित समान एवरेज रेवेन्यू गोटे द्रव्य बिकिले आम जिते टंका पाउछि सेटा कोन सेटा होजे प्राइस सो एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर इक्वल सो रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ a product or good is called average revenue. The next one is what is marginal revenue? Marginal revenue is the change in total revenue due to sale of one additional unit of good. गोटे अधिक बिकले आम केते आय आमर केते वृद्धि होछि that is marginal revenue. So marginal revenue is the change in total revenue due to sale of one additional unit of good. Next is what is profit? Profit is the difference between total revenue and total cost. Total revenue and total cost. Total revenue माने कोन जेते टंका उत्पादक पाउछंती total cost माने जेते खर्च होईची दुईटा काटला परे जोटा ता पाखरे निजे रहिला that is profit. So profit is the difference between total revenue and total cost. Total revenue total cost भितर जते difference अधिक हुए ताहले profit भी अधिक हेबो. So profit is nothing but the difference between total revenue and total cost. Next question is what is competitive market? Competitive market or perfect competition market. So it is the market in which there are large number of sellers selling a goods which are the goods which are homogeneous good. Okay, in this market there are large number of sellers बहुत संख्यक विक्रेता थांती एंड होमोजेनियस प्रोडक्ट माने जो गुड्स बिक्री करूथांती से गुड्स क्वालिटी समान थाए ओके दैट इज द कॉम्पिटिटिव मार्केट the market in which there are large number of sellers sell and purchase a good of homogeneous quality or homogeneous good that is competitive market. तो ये मार्केट कौन हुए प्राइस टा गोटे ही थाए एंड दैट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट रे बाजार ही निर्धारित करि थाए द्रव्यर दर. So this is about competitive market. This is also known as perfect competition market. In this market there are large number of sellers. Then next is what is homogeneous product? Product of equal quality or same quality is called homogeneous product. Quality यदि समान अछि दुईटी द्रव्यर क्वालिटी यदि समान हैला क्वालिटी क्वांटिटी सब यदि समान हैला that is homogeneous product. The product which are of equal quality is called homogeneous product. Next is why average revenue curve is horizontal to x-axis in competitive market. Average revenue curve टा perfect competition market रे कौन होता है horizontal to x-axis सहित horizontal होता है average revenue curve. Why? Because a firm has no control over the price. A firm has no control over the price. The firm is bound to sell his goods with that price.
तो प्राइस को से चेंज करि पारुनी से क्वांटिटी को कम बेसी करि पारिबो ओके सेति पय कोन हुए एवरेज रेवेन्यू कर्वटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस माने एक्स सहित हॉरिजॉन्टल होइथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू आर इक्वल इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे एमआर और एआर कहीं इक्वल होइथाय माने एआर माने कौन प्राइस ओके सपोज गोटे द्रव्यर दाम होची 10 टंका दुईटी द्रव्य बिकिले 20 तीनोटी द्रव्य बिकिले 30 चारोटी द्रव्य बिकिले 40 ओके एमती होची तो गोटे जदि एक्स्ट्रा से बिक्री करूची ताले केते केते इंक्रीज होची 10 इंक्रीज होची द चेंज इन टोटल रेवेन्यू टा केते 10 चेंज इन टोटल रेवेन्यू माने कौन दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू जो चेंज होची 10 10 ही बढ़ुची 10 10 बढ़ला सो 10 टा कौन 10 टा होची प्राइस सो इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट AR इज इक्वल टू MR कहीं होई थाए बिकॉज प्राइस इज फिक्स्ड प्राइस टा जेहेतु फिक्स्ड अच्छी प्राइस टा चेंज हुएनि फार्म जो गोटे फार्म पाई सेति पाई मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू गोटे द्रव्य यदि एक्स्ट्रा यदि बिक्री करूची ताहले टोटल रेवेन्यू रे प्राइस रो परिमाण रे दर रो परिमाण जेते अछि सेते परिवर्तन हबो माने 10 10 10 10 बढ़ुची दैट 10 इज द एवरेज रेवेन्यू तो सेति पय परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे MR इज इक्वल टू AR। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट is the value for the quantity of marginal product or we can say it is the product of marginal product and price VMP that is value of marginal product is equal to marginal product into price marginal product into price this is the value of marginal product यूट लेबर जदि सपोज 5 जदि हला तार प्राइस सहित आम इंटू करदेवा तो 50 है मार्जिनल प्रोडक्ट माने आम कहि परबा गोटे लेबर रो कंट्रीब्यूशन केते इन टर्म्स ऑफ मनी मुद्रा आकार रे तार कंट्रीब्यूशन केते जदि 5टा द्रव्य से उत्पादन करूची आ गोटे द्रव्यर परिमाण जदि 10 टंका ताहले 50 टंकार जिनस से उत्पादन करूची दैट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज equilibrium wage rate what is equilibrium wage rate the wage rate at which the labor demand and labor supply are equal that is the equilibrium wage rate the wage rate at which the demand for labor and supply of labor are equal is called equilibrium wage rate तो एमती गोटे वेज रेट जो डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर आर इक्वल ओके जो कौन हुए दिस इज ए रिजिड वेज रेट और वी कैन से दिस इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेबल वेज रेट जदि अधिका जदि होची वेज कौन हुए सप्लाई अधिक हो जिवो तो ऑटोमेटिक वेज कमी जिवो जदि वेज इक्विलिब्रियम वेज रु कम जदि हला ताले डिमांड रहिबो अधिक सप्लाई ठारो तो वेज बढ़ी जिवो so equilibrium wage rate is a stable wage rate। Next what is rental price of capital what is the rental price of capital so rental price of capital is the price for temporary owning a capital this is the rental price of capital जोटा को आम भड़ा जदि नेला गोटे जमी को जदि भड़ारे आम नौचे ताहले किछि दिन आम से मालिक रहिले सो दिस इज द प्राइस फॉर टेम्पोरारी ओनरशिप प्राइस फॉर टेम्पोरारी ओनरशिप किछि दिन आम ओनर रहिले से जमीर किंबा मेसीन जहाँ भी किछि जिनस है भड़ा जोटा कही था आम तो टेम्पोरारी किछि आम किछि दिन मालिक रहिले that is the rental price of capital it is the price for temporary owning a capital just opposite होचे purchase price of capital
So purchase price of capital is the price for permanent ownership. This is the price for permanent ownership. जदि गोटे जिनस को आम किणिले ताहले सबुदिन आम मालिक हेले. So this is the purchase price of capital. ओके जोटा को परमानेंट आम से ओनर हो गले. फॉर ओनिंग परमानेंटली ए कैपिटल इज कॉल्ड द परचेज प्राइस ऑफ कैपिटल. सो दिज आर द क्वेश्चंस. हम देखिले कि क्वेश्चन तो यही वीडियो तले लिंक रे मुझे देदेवि क्वेश्चन माने सब टाइप क्वेश्चन रहिबा थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट रो. तो से क्वेश्चन गुड़ा को हम प्रैक्टिस करवा. यही क्वेश्चन गुड़ा सब प्रैक्टिस करदेले भी एग्जाम पाई यथेष्ट. ओके तो सही क्वेश्चन गुड़ा जोटा थी से प्रैक्टिस करवा. ता सहित संबलपुर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी देदेवि केमती टाइप रो पड़े. ओके सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास. जदि क्लास टी हेल्पफुल होइए प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो.